Assalamu alaikum students. Once again, welcome to the course of work-based learning project. In this course, we are learning about what work-based learning is and the skills and the things that are necessary for any student to learn at university level to implement those skills while they are working and when they have joined some of the organization after completion of their studies maybe, or at times universities send their students to work in some organizations during their courses, during their studies. Students, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं पिछले लेक्चर्स को. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेनिफिट्स ऑफ वर्क बेस्ड लर्निंग. बेनिफिट्स हम लोगों ने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए डिस्कस की थी, जिसमें हम लोगों ने जो ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए थे उसमें स्टूडेंट्स थे, उसमें एम्प्लॉयर्स थे, उसमें यूनिवर्सिटीज़ थी. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये कहा था जहाँ पे ये ट्राइका यूनिवर्सिटीज़ का, एम्प्लॉयर्स का, स्टूडेंट्स का बनता है और जहाँ पे वर्क बेस्ड लर्निंग का फ़ायदा इन तीन स्टेक होल्डर्स को होना चाहिए, वहाँ पे उस चीज़ को, उस जगह को भी तो फ़ायदा होना चाहिए जहाँ पे ये ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है. यस, ऑफ कोर्स, दैट इज आवर कम्युनिटी. हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी, हमारी इकोनॉमी. आफ्टर ऑल, वर्क बेस्ड लर्निंग का कुछ फ़ायदा तो आपकी इकोनॉमी को भी होना चाहिए ना स्टूडेंट्स, राइट? So let's start this lecture with benefits of work-based learning for the community. आपके ख्याल में अगर एक बंदा स्किल्ड है, जिसके पास प्रायर नॉलेज भी है और अब वो उस नॉलेज को इफेक्टिवली किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ भी कर रहा है या कर सकता है, तो इसका फ़ायदा आपकी कम्युनिटी को क्या है? यस, देयर कैन बी मल्टीपल बेनिफिट्स. लेट्स लुक एट फ्यू ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ वर्क बेस्ड लर्निंग फॉर आवर कम्युनिटी या फॉर दैट मैटर इकोनॉमी. सो द फर्स्ट पॉइंट स्टेट्स दैट it helps in raising competitiveness and growth. The more skilled people you have, the more learned people you have, the more experienced people you have, that helps you to raise your standard of living, that helps you to raise the knowledge economy, that helps you to raise the intellectual capital. Do you know students? आपके मुल्क से, आपके मुल्क पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो कि एक्सपर्ट हैं डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी के, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज में, they have got their expertise, are moving outside of Pakistan in the form of brain drain. Okay, that discussion will lead us to some other side, but for the time being, if we try to retain all those people having skills, having adequate, proper, appropriate knowledge, हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपने बिजनेसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपने बिजनेसेस को डेवलप कर सकते हैं, हम अपने न्यू बिजनेसेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं.
और हम लोग इस तरह दुनिया की बहुत सारी इकोनॉमीज़ जो कि हमसे स्ट्रॉन्ग नहीं हैं या हमारे बराबर हैं, उनको compete करके आगे जा सकते हैं. So students, first of all, work-based learning, vocational learning, skill-based learning, active learning की जब हम बात करते हैं, हमारे जहनों में जब वर्क और लर्निंग इकट्ठी आती है तो हम लोगों को यही सोचना चाहिए कि इस वर्क बेस्ड लर्निंग को मज़ीद एनहांस करने, इस वर्क बेस्ड लर्निंग को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए. जितनी कोशिश आप करेंगे, जितनी कोशिश आपकी कंट्री करेगी, जितनी कोशिश आपकी यूनिवर्सिटीज़ करेंगी, जितनी कोशिश आपकी कोलैबोरेशन ऑफ एम्प्लॉयर और यूनिवर्सिटी से हो पाएगी, उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपकी कम्युनिटी को, उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपकी इकोनॉमी को. The second point, the second benefit that we have about learning and involving ourselves in work-based learning is it helps creates an environment of collaboration and cooperation. Yes, this is right. जब आपका यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री कोलैबोरेशन होगा, जब एम्प्लॉयर आपकी यूनिवर्सिटी को आपके ग्रेजुएट होने से पहले ही डिमांड दे देगा, आई नीड पीपल हैविंग सच एंड सच स्किल्स, जब ये इम्प्रेशन कम्युनिटी में, सोसाइटी में कम्युनिकेट होगा, देयर विल बी हार्मनी एट ऑल द साइड्स, देयर विल बी हार्मनी in all spheres of life. So एक कॉन्फिडेंस का, एक कोलैबोरेशन का एनवायरनमेंट जनरेट होगा, ओवरऑल लोग सेटिस्फाइड होंगे. Students will be satisfied in terms of getting the job openings, in terms of getting the opening for earning their respectable livelihood. Universities will be satisfied on the basis of delivering the right, appropriate knowledge, appropriate value, not only to the students but also to the community. It helps in increasing employability. Yes, when there will be an increased employability in your society, crime rate will go down. The research studies show that those communities, those societies that have a problem of unemployment, more unemployment leads to more crimes as well. हार्मनी की इन्वायरमेंट नहीं होगी, लोग उन लोगों से जिनके पास है उनसे छीनना चाहेंगे, किसी भी सूरत अमन व अमान नहीं हो पाएगा. जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट होंगे, सेटिस्फाई होंगे कि जो कुछ उन्होंने लर्न किया है, they will not waste it, rather they will have their relevant job with respect to the skills, knowledge they have acquired from the universities, and definitely those required skills will be delivered, will be transferred to the students on the basis of demand from the industry. So the employer will also be satisfied, will also be confident about a person to whom he is hiring, that that person must be having the skills that were demanded by us. तो इससे क्या है स्टूडेंट, अगेन ओवरऑल सोसाइटी को, ओवरऑल इकोनॉमी को फ़ायदा है, स्टेबिलिटी है, क्राइम रेट कम है, सेफ्टी है, लोग ज़्यादा एतमाद में होंगे, वो अपनी मज़ीद बेहतरी की तरफ सोच सकते हैं.
जब कभी भी किसी इंसान के पास रेस्पेक्टेबल अर्निंग्स होती हैं तो वो मुस्बित सोच इख्तियार करने की कोशिश करता है। जब कभी भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज वीक होते हैं, इंसान मुख्तलिफ किस्म के रॉन्ग डूइंग्स की तरफ जाने की कोशिश करता है, शॉर्टकट्स अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, जो कि एक वीक सॉर्ट ऑफ बिहेवियर है। सो व्हेन एम्प्लॉयबिलिटी इज मोर, व्हेन there is university industry collaboration, when students are satisfied that they are going to have proper job relevant to their area, relevant to their field of study, there will be overall comfortable environment in the society, and government has to invest less in controlling crimes and providing safety to the people. Moving to another benefit of work-based learning to the societies, it states that it provides a sense of corporate social responsibility. When overall community, when the people living around the businesses feel that this organization is not doing business only, rather it is also taking care of me, also taking care of the environment, also taking care of the things to which a common citizen has to deal with, so they will have more confidence in those organizations, in those businesses, in those employers who take care of the society, who take care of the people living around their businesses. तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये हुआ कि वो बिजनेसेस जो कि ओवरऑल सोसाइटी की फलाह के लिए भी काम करें, उसका ख्याल भी रखें, और एक तरीका कार ये हो सकता है कि जो भी बिजनेसेस हैं आपके इलाका में, जो भी बिजनेसेस हैं आपकी सोसाइटी में, अगर वो ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं तो हम ये कहेंगे कि यस, दे आर प्लेइंग देयर रोल एज अ social responsibility. They are feeling the need for it and they are contributing towards fulfilling this responsibility. तो इससे अगेन एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे होता है, इससे अगेन एक पॉजिटिव, हेल्दी, सेफ, ट्रस्ट की इन्वायरमेंट क्रिएट होती है बिजनेसेस में और कम्युनिटी में. सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि वर्क बेस्ड लर्निंग ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि बहुत सारे और स्टेक होल्डर्स जो कि एक सोसाइटी का हिस्सा होते हैं उसके लिए भी ज़रूरी है. सो स्टूडेंट्स, आफ्टर लुकिंग एट दीज बेनिफिट्स, नाउ मूव ऑन टू लुकिंग एट फ्यू अदर थिंग्स अबाउट वर्क बेस्ड लर्निंग. सो नाउ एट दिस स्टेज it becomes necessary to look at the need. What is the need of work-based learning? Why we have discussed all these things related to learning? Why we are concerned that much about work-based learning? Why we want to encourage work-based learning in our universities, in our community, in our country as a whole? Why we are advocating this concept to be present there in the universities? Why the students should be ready for it? So let's go through few of the needs that is necessary to highlight presence of work-based learning in our universities, in our curriculum, in our community. Need for work-based learning. I will be reading it from the slides for you people just to highlight the need according to few of the researchers, according to the research findings of the researcher. So, research by Erupt 2004 identified the gap between the knowledge needed and the knowledge and skills produced through formal education.
सी स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें पता चला, इनके रिसर्च पेपर से हमें पता चला, इनकी रिसर्च फाइंडिंग से हमें पता चला कि जो नॉलेज हमारी यूनिवर्सिटीज़ इम्पार्ट कर रही हैं और जो नॉलेज इंडस्ट्री की, हमारी कम्युनिटी की, बिजनेसेस की, एम्प्लॉयर की डिमांड है, उसमें डिफरेंट, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, उसमें कुछ ना कुछ गैप है। इसकी बहुत बड़ी वजह कोलैबोरेशन का या ऐसे इन्वायरमेंट का ना होना है जो कि इस चीज़ को इंश्योर करे कि वही चीज़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा सके, पढ़ाई जाए, जो कि एम्प्लॉयर्स की नीड है, जो कि बिजनेसेस की ज़रूरत है। सो लेट्स गो थ्रू द रिसर्च ऑफ दिस रिसर्चर and try to identify what type of knowledge is generally being imparted by the universities and what type of knowledge still needs a lot of attention from the university sides to be imparted among students. So students, the types of education, the types of knowledge that he has categorized include theoretical knowledge, methodological knowledge, practical skills and techniques, generic skills, and general knowledge about that specific occupation. वैसे तो हम ये समझते हैं कि शायद नॉलेज तो एक ही तरह का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें रिसर्च से पता चला कि जो टाइप्स ऑफ नॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं उनमें किसी दर्जे में किसी हद तक फ़र्क है। सो he says that types of knowledge which vocational and professional educational institutions claim to provide, वो ये जो कि मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड से पढ़े। होती क्या हैं ये सारी चीज़ें? लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशंस ऑफ ईच ऑफ देम फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स of these types of knowledge that is being imparted, that is being given by the universities या vocational institutions जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। So first one is the theoretical knowledge. What basically is theoretical knowledge? As the meaning of theory comes in our mind, that is about theoretical knowledge pertains to reading about something. Theory है जिसमें के एक्शन नज़र नहीं आता, जिसमें के हमें कुछ होता नज़र नहीं आ रहा, बल्कि this is focusing upon what is this, what is that, क्या चीज़ है। So when we talk about theoretical knowledge is reading about something, some occupation, maybe about some skills. हल्की सी एक एग्जाम्पल लेते हैं। ख़वातीन हमारे घर में सीखती हैं खाना कैसे पकाया जाए, उसके बारे में कोई रेसिपी पढ़ लेती हैं, कोई बुक कंसल्ट कर लेती हैं, हाउ टू कुक अ फूड. So when they are obtaining knowledge by going through that recipe, by going through that book, it is known as theoretical knowledge. In the example of driving a car, if someone is interested to know, to learn about driving a car, and he consults some book, goes through it, reads it page by page, paragraph by paragraph, so we say that
This is theoretical knowledge that he is getting, that he is obtaining. तो आमतौर पे स्टूडेंट्स ये आपका भी मुशाहिदा रहा होगा कि जनरली फॉर्मल सेटिंग्स में, फॉर्मल सेटिंग्स ऑफ एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में ज़्यादातर किताबें पढ़ाई जाती हैं, ज़ोर दिया जाता है थ्योरेटिकल लर्निंग पे, कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकली भी करवाने की कोशिश की जाती है. सो व्हेन अ नॉलेज lacks the essence of doing something practical, so that is known as theoretical learning. Let's move on to the slide and look into the details. Theoretical knowledge means reading about something. So when you are concerned with reading, when you are concerned with going through the things, so it is about theoretical knowledge. It is explanation of something. Definitely जब हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं थ्योरी की, जब हम प्लेन राइटिंग की बात करते हैं, एनीथिंग इन राइटिंग इज थ्योरेटिकल. सो व्हेन वी ट्राई टू नो, when we try to gain knowledge about the explanation of the driving process, when we want to know about the things that have been installed in a car, and when we read about those installations in a car, so that is known as theoretical knowledge that we are gaining, the theoretical knowledge that we are obtaining. A theoretical knowledge of a subject is knowledge of the principles and ideas of the subject. Theoretical knowledge क्या चीज़ है? Theoretical knowledge basic principles हैं, basic functions हैं और basic ideas हैं किसी भी discipline के हवाले से. So this is known as theoretical knowledge. Knowledge gathered from books on the subjects. The next point is about that this is a type of knowledge that can be gathered from secondary sources in the form of books, in the forms of research papers, in the form of written document present to make the learner learn. So it is all about theoretical perspective of obtaining knowledge. Reading about how to resolve a conflict. If you want to acquire skill, if you want to acquire knowledge about solving a conflict, आप कोई बुक कंसल्ट करते हैं, उसमें स्टेप्स को पढ़ते हैं कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल स्टेप्स ऑफ रिजॉल्विंग अ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, what are the necessary components, what are the necessary steps, what are the necessary procedures, how to communicate with the people, how to communicate with different people who are actually involved in the conflict. So जब आप इस सारे चीज़ों को पढ़ते हो, शायद आप कहीं कोई कोर्स ऑनलाइन ले लो, शायद आप कोई किसी लाइब्रेरी में चले जाओ और बुक उठा लो और पढ़ना शुरू कर दो. So that will be all about theoretical knowledge. Since you are not practicing it, since you are not involved in solving any examples of conflict, since you are not solving any conflict at that moment of time, so it is about theoretical knowledge, obtaining theoretical knowledge from the written resources, from the books. On the other hand, if we look at the methodological knowledge, it pertains to methods, it pertains to procedures, it pertains to step-by-step solution or reaching up to something. So students, it is a body of practices, procedures and rules
used by those who work in a particular discipline. Methodological knowledge से हमें क्या पता चलता है? Methodological knowledge से हमें ये पता चलता है what steps should be taken to resolve conflict. Suppose if we have to deal with conflict and we are interested to resolve this conflict, so we must know what are the required steps that are to be taken to resolve the conflict. What procedures can be adopted? So when we read about, when we try to know about the procedures, when we are now slowly and gradually moving towards the practical side of the things, it is known as methodological knowledge. आप स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएट प्रोग्राम के, आपकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एक प्रोजेक्ट या एक रिसर्च रिपोर्ट या at times in higher education you are supposed to write thesis based on some research work for the completion of that degree. क्या ऐसा होता है? जी स्टूडेंट्स, ऐसा होता है. आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है at times to fulfill, to carry out some research work. So अगर रिसर्च वर्क की बात करें तो रिसर्च वर्क में एक पूरी चीज़, एक पूरा हिस्सा होता है methodology का. That what ways, what procedures will you be adopting, or when you are actually performing it, what procedures you have adopted for completion of that research work. So that is known as methodology. Step by step approach, procedures, processes. एक रिसर्च के स्टूडेंट क्या कुछ यूज करते हुए रिसर्च को कंप्लीट करता है? He is or she is supposed to write about sample which is particularly related to the respondents. He is supposed to write about the sampling technique, how she has chosen the sample, how he has analyzed the data, how he has collected the responses, by using which tool he has gathered those responses from the respondents. So कहने का मतलब ये, उस completion of project के लिए, उस completion of thesis के लिए you should be clear about methodology. अगर आपको procedures का पता नहीं है, अगर आपको processes का पता नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप उस project को complete करने में नाकाम रहोगे. तो ये जो knowledge है methodology के हवाले से, ये जो नॉलेज है मेथोडोलॉजी या प्रोसीजर्स को सीखने के हवाले से, ये भी हम फॉर्मल सेटिंग्स में आमतौर पे सीखते हैं. आमतौर पे हमें किसी हद तक थोड़ा बहुत ही सही कुछ ना कुछ मेथोडोलॉजी के हवाले से भी यूनिवर्सिटीज़ में सिखाया जाता है. सो मूविंग टू द स्लाइड, इट सेज दैट फॉर इंस्टेंस इफ वी टेक एन एग्जांपल, procedure for resolving a conflict. Now that may be available in the book. You may get the procedure by looking at the research papers written by other researchers, or there was a workshop in which you have participated to learn how the conflict can be resolved, to know the procedures that are to be used for resolution of, for resolving that conflict. तो जब आप प्रोसीजर्स लर्न करते हैं, जब आप अप्रोचेस लर्न करते हैं, सो दैट इज़ methodological knowledge. Methodological knowledge at some times is a part of curriculum
at sometimes it is not. जिसका गिला हमें ये रिसर्च करती नज़र आती है जब गैप्स की हम बात करेंगे. Moving ahead to another type of knowledge that is generally given to us by the universities include practical skills and techniques. Do you agree with me that universities make you learn these practical skills? Universities impart such knowledge that is based on practical skills and techniques. क्या आपकी यूनिवर्सिटी में आपके पिछले एक्सपीरियंस में ऐसा कभी कुछ हुआ? Just think over it for a short while and answer my question. Yes, students, ऐसा होता है. This is a part of our formal education system that we learn from our schools, learn from colleges, learn from universities about practical skills and knowledge, practical skills and techniques. Suppose क्या मैथमेटिक्स आपको आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने सिखाई, स्टैटिस्टिक्स आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने सिखाई, इंजीनियरिंग में जो फार्मूलाज जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं, सेफ्टी के प्रोसीजर्स यूज़ होते हैं, आपको आपकी यूनिवर्सिटी ने सिखाए. So these are basically the practical skills that you are developing. वो लोग जो कि कंप्यूटर साइंसेज की फील्ड से रिलेटेड हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स नेटवर्किंग सीखते हैं, प्रोग्रामिंग सीखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ वेब पेजेस सीखते हैं. ये सारी चीज़ें कौन सिखाता है? यूनिवर्सिटीज़ आमतौर पे सिखाती हैं. इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्मल कैरिकुलम विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक फील्ड. एक MBBS डॉक्टर की बात कर लेते हैं. MBBS डॉक्टर को क्या स्किल्स सिखाई जाती हैं? ऑपरेट करना, सर्जरी करना, मेडिसिन एडवाइज करना वगैरह. एक चीज़ स्टूडेंट समझ लेनी चाहिए कि जब हम प्रैक्टिकल स्किल्स की बात करते हैं, टेक्निक्स की बात करते हैं, तो दीज आर द प्रैक्टिकल स्किल्स, दीज इन्वॉल्व एक्शन लर्निंग, दीज आर समथिंग प्रैक्टिकल दैट वी डू, दैट वी परफॉर्म. जैसे मैंने कहा, इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियर्स के लिए रिपेयरिंग ऑफ समथिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ समथिंग. कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम डेवलप करना, कंप्यूटर्स को इंस्टॉल करना, आपस में लिंक अप करना, नेटवर्किंग जिसको हम कहते हैं. ये जो चीज़ें हैं जो कि फिज़िकल एफर्ट्स मांगती हैं, जो कि फिज़िकल बॉडी की जो प्रैक्टिसिंग है वो मांगती हैं, दीज आर नोन एज जनरली skills and techniques to perform certain job. So this is one type of knowledge according to this researcher that we take, that we sought from our universities. Practical skills are the doing skills. As I have right now told you that these are something in which a human being is generally physically involved as well as mentally involved to perform certain action, to perform certain job, to perform certain activity. So these skills are generally related to or can be known as doing skills. These are practical in nature. For instance, to solve a conflict one way, know how to. So this is about to resolve a conflict, one may know how to resolve a conflict. So learning the skills that are necessary to solve the problem, that are necessary to resolve the conflict may include
First of all, listening effectively to the people and how to communicate at the time of, during conflict resolving. So when a person learns how to listen, what are the important points that should be considered while listening to the conflicting parties, as well as how to communicate, which way of communication to be adopted, which style of communication to be adopted during conflict resolution. So these will be known as skills. These will be known as practical skills to resolve certain conflict. Generic skills. Generic skills are the skills, although हमने थोड़ी देर पहले बात की कि when it comes to skills तो हम कोई चीज़ practical learn कर रहे होते हैं. Generic skills are bit comparatively difficult and are of higher level than the practical skills. Practical skills में इंसान की जो physical involvement है शायद वो ज़्यादा होती है, जबकि generic skills में mental involvement, intelligence level, mental capacity ज़्यादा contribute करती है. इसकी कुछ एग्जाम्पल्स अभी आगे हमारे डिस्कशन का हिस्सा बनेंगी. सो वी विल बी एबल टू लर्न दैट व्हाट आर जेनेरिक स्किल्स. स्टूडेंट्स, द जेनेरिक स्किल्स आर द स्किल्स दैट आर लर्न आफ्टर going through theory, after using or adopting some methodology, after involving oneself practically in those skills for their achievement as well as for their refinement. So let's go through the slide one by one for more discussion. Generic skills are sometimes referred to as learning how to skills. How to skills से क्या मुराद है? This is something learning about something. Learning about how to make decisions. When you are practically involved in making decisions under different circumstances, with different resources, for different problems arising in your organization, so we say that this is learning how to make decisions. Not merely going through the process, not merely reading the book, not merely looking at or memorizing the procedures to be followed for decision making, rather to acquire this skill by involving mentally and physically to solve it. Suppose एक आम फहम सी एग्जाम्पल, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, रास्ते में गाड़ी चलाते हुए खुदा न खास्ता गाड़ी हिट हो गई. Under that particular situation, the decisions that you will take will pertain to this generic skills. While working in the organization, a new boss arrived in your organization and he wants to transfer you from this existing present position to rather present organization to some other outlet, some other branch. What will you decide? How will you decide is related to generic skill. So students, it says that it combines knowledge and practice. The previous knowledge that you had about methodological knowledge, about theoretical knowledge, about learning about certain practical skills. Now this is knowledge plus practice in terms of expressing oneself in the real
situation. तो स्टूडेंट्स जेनरिक स्किल्स कौन कौन सी होती हैं? These are high order skills and are transferable. एक तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हमें सीख लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए कि these are higher order skills जो कि सिर्फ पढ़ लेने से, जो कि किसी को करता देख लेने से हासिल नहीं होती, बल्कि उस वक़्त तक हासिल करना मुश्किल है जब तक बंदा खुद बजाते खुद प्रैक्टिकली उन सिनेरियोज़ में, उन सिचुएशंस में पढ़ के, इन्वॉल्व हो के, लिंक हो के अपनी एबिलिटीज़ को शो करे और ये स्किल्स सीखे. It is learning about generic skills is to learn about how to make decisions, how to manage resources, how to resolve conflicts. घर पे कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कैसे सॉल्व करना है? ऑफिस के वर्क प्लेस में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कैसे सॉल्व करना है? So it is about learning how to learn the skills basically. Another thing, general knowledge about the occupation. General knowledge is gathering knowledge via non-specialized media, gathering information from anywhere. स्टूडेंट्स, जनरल नॉलेज से क्या मुराद है? जनरल नॉलेज से मुराद एक तो वो फॉर्म ऑफ एजुकेशन है, वो फॉर्म ऑफ नॉलेज है जो कि आपको फॉर्मली आपकी यूनिवर्सिटी ने ऑफ़र की, आपने सीखी, आपने पढ़ा, आपने प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए, प्रोसीजर सीखे. अब एक जनरल नो हाउ है, जनरल थिंग्स हैं. व्हाट आर द अपडेट्स अबाउट द वेज ऑफ रिजॉल्विंग अ कॉन्फ्लिक्ट? Now you are looking into the world around you, about knowing about resolving the conflicts. Suppose Telenol, Telenol, T-E-L-E-N-Y-O-L, Telenol. Telenol was a syrup produced by Johnson and Johnson, one of the companies. How they have resolved the conflict and the crisis situation that they have experienced. This is based on my own interest. This is based on the interest of any student, and he wants to learn how they have resolved this conflict. So it will be about acquiring general knowledge about resolving a conflict. Similarly, if we look at Toyota's example, Toyota, a vehicle company that used to produce different types of vehicles. एक इशू आया था उनका ब्रेक्स के हवाले से, जो कि उन्होंने रिजॉल्व किया. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो क्राइसिस या ये जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आई थी, customers refused to buy that model, how they have overcame this problem, how they have made customers satisfied. So this will be an example of acquiring general knowledge, and generally this type of knowledge, general knowledge, is given to us in normal courses of action in universities. This research enables us to know that although most of the universities impart all these types of knowledge, but still there is a gap. Basically हम लोग इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि ठीक है, टाइप्स ऑफ नॉलेजेस जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखी, समझी, मेजॉरिटी लर्निंग इंस्टीट्यूशंस में ऑफर की जाती हैं, लेकिन स्टिल देयर इज अ बिग गैप. दैट इज, दिस रिसर्च इज ऑफ द व्यू कि बाकी तो सारी
knowledge impart की जाती है, लेकिन still there is need to enhance. First of all, still there is a need to provide and then enhance imparting of the knowledge related to methodological knowledge, generic knowledge, and general knowledge about the occupation. Students, हम generally classrooms में, हम generally universities में, lectures के दौरान, presentations के दौरान, seminars के दौरान, normal while we are studying in the libraries, we majorly focus on the theoretical sides of the things, theoretical aspects of the things. Whereas he has identified a gap that there is a need for universities to develop such curriculum, develop such infrastructure that encourages, that supports to provide methodological knowledge, generic knowledge, and general knowledge about the occupations. मैं ये नहीं कह रहा कि ये टोटली नहीं होता, होता है, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में होता भी है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होता, लेकिन अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो जो चीज़ इंडस्ट्री की ज़रूरत है, जो चीज़ बिजनेसेस की ज़रूरत है, जो चीज़ आपकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा सकती है, जो चीज़ आपको मज़ीद इफ़ेक्टिव बना सकती है, वो है प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग, वो है प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग, वो है एक्टिव लर्निंग, वो है वर्क बेस्ड लर्निंग. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा, सिंस दिस इज़ द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री टू make students enable to learn these types of knowledge, that is methodological, generic and general knowledge. तो स्टूडेंट्स, इस गैप को फुलफिल करने के लिए, इस गैप को ओवरकम करने के लिए, it is encouraged for the universities to impart these types of knowledge. अगर इस तरह की नॉलेज हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अगर तो मौजूद है, बहुत बेहतर. अगर मौजूद नहीं है तो दे हैव टू रिवाइज देयर करिकुलम्स एंड थिंक ओवर इट टू फुलफिल दिस गैप फॉर बेटर एम्प्लॉयबिलिटी एंड एज अ होल बेटर सोसाइटी. हमने बहुत कुछ पढ़ा, कुछ बैकग्राउंड डेवलप करने की कोशिश की, लर्निंग क्या होती है, वर्क बेस्ड लर्निंग की क्यों ज़रूरत है, क्या बेनिफिट्स हैं वर्क बेस्ड लर्निंग के. हमें ये भी तो जानना चाहिए वर्क बेस्ड लर्निंग किसने इंट्रोड्यूस करवाई. सो नाउ लुकिंग एट द फाउंडर ऑफ वर्क बेस्ड लर्निंग, द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ वर्क बेस्ड लर्निंग is Benjamin Franklin. Benjamin Franklin belonged to USA and lived from 1706 to 1790. He was such a talented person, he was such a learned person that he was supposed to be a polymath. Polymath is a person, polymath is an individual who is involved in doing different types of activities
and those activities are generally practice-based activities which result in providing some benefit to others. So the term polymath is used for a person having wide range of knowledge or learning. So when you become expert, when you gain knowledge about different fields of study, so it becomes polymath. Franklin was an author, a scientist, a politician, an inventor at the same time. He has acquired knowledge, he has practiced the acquired knowledge in different fields and developed different expertise in him. One of the important inventions by Franklin includes a lighting rod. जब उनकी इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड नॉलेज को स्टडी करें तो पता चलता है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये जो लाइटनिंग रॉड है, दिस हैज़ बीन इन्वेंटेड बाय फ्रैंकलिन. Why I am basically interested to know about this renowned researcher, philosopher, renowned polymath in the course of work-based learning, because the motivation that he gives us to learn something based on practice, to learn something based on acquiring practical skills is important. He was one of the big advocates of attaining learning. Here I have included few of the quotations from Benjamin Franklin for understanding of the importance of knowledge. He is of the view, he is advocating lifelong learning as continual professional development, means to say, ये यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि if you want to achieve lifelong learning means to acquire such knowledge, to acquire such skills which will benefit you for a longer period of time. So when you want to acquire such knowledge which will benefit you for a longer period of time, it is impossible without practice. It is impossible without your continuous professional development. So to highlight this lifelong learning, he has provided us with a quote, and the quote states that without continual growth and progress, such words as improvement, achievement, and success have no meanings. No doubt, we really agree to this quotation that so far as you stop learning, so far as you stop doing things by yourself, so far as you stop learning the skills, और कभी सीखी, कभी नहीं, कभी पढ़ा, कभी ना पढ़ा, इरेगुलरिटीज़ में अगर आप पढ़ गए तो आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग शायद करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, सस्टेनेबल लर्निंग करना मुश्किल हो जाएगी, लंबे अरसे तक चीज़ों को याद रखना और अप्लाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हम अपनी क्लासरूम्स के हवाले से इंक्लूड कर लेते हैं. एक जनरल ऑब्जर्वेशन है हमारी कि जब तक आप कोई कोर्स पढ़ रहे होते हैं, जब तक आप कोर्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, तो आप सीख भी रहे होते हैं, सोच भी रहे होते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन
is generally being produced in the minds of the students, but as soon as the semester or the year finishes, you stop studying those things, those relevant topics, that subject. आसान सी बात कर लेते हैं, मैथमेटिक्स हमें सिखाई जाती है. मैथमेटिक्स में बहुत सारे फार्मूलाज, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें क्लासरूम में कराई जाती है. जब तक हम उससे लिंक्ड रहते हैं, उस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहते हैं, हमें फार्मूलाज याद रहते हैं और हम लोग क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. बट एज सुन एज द कोर्स फिनिशेस, क्लास एंड अप हुई, सेमेस्टर ख़त्म हुआ, आप दूसरे सेमेस्टर में गए, कुछ अरसे बाद चीज़ों को स्टडी नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, चीज़ें भूलना शुरू हो गई. सो ही इज़ ऑफ द व्यू दैट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग you have to have continuous and experience based practical learning. You have to be in touch with the knowledge. So if you want to achieve success, you have to practice, you have to continuously link yourself with acquiring as well as with practicing of a knowledge. Moving on to the other quotation provided by the founder of work-based learning. He is putting light on the importance of investing in learning. He is of the view that the more investment that you make for learning will benefit you in a long run. And it is necessary to invest for learning, for acquiring skills, for acquiring knowledge, for acquiring different aspects of expertise related to your life, related to your workplace. And in these words, he is expressing his views about investing financial resources for acquiring knowledge and ultimate learning. The quotation related to this concept is stated over here. The quotation states that the only thing more expensive than education is ignorance. It's a good quotation. It means that if you invest in education, definitely you will get more benefit out of it. You will be more comfortable. You will be more wise while investing and after investing. Whereas if you don't invest, negligence will cost you more. The ignorance will cost you more. एक जानने वाला ना जानने वाले से बेहतर है. अंधेरे में तीर चला देना इस बात की निशानी है कि तीर निशाने पर ना लगे. एक काम बगैर कुछ जाने करना इस बात की दलील है कि सक्सेस के उसके चांसेस बहुत ही कम हैं. गाड़ी ड्राइव करना without knowing about it, without learning how to drive, without consulting the opinion of people, without taking the precautionary measures, will be a dangerous thing. इसी तरह से मैनेजमेंट में डिसीजंस लेना, मैनेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट्स को ऑर्गेनाइजेशंस में रिजॉल्व करना without knowing about it will cost you more. Okay, now move on to another important aspect of learning with respect to Franklin. Now over here if we compare and contrast the thinking, the opinion of Franklin and Cobb, almost we observe similarity in the thoughts of Cobb and Franklin. Cobb is of the view that generally human beings learn by practice. Over here, Franklin is
also of the view that people learn, students learn, overall individuals learn by doing the things. In this regard, he has given us a quote, a beautiful quote, and the quote states that, "Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn." Wow, what a beautiful quote. Yes, it is true that only telling something, only theorizing something, only reading about something is not necessary, is not only reading about something, only theorizing something is not necessarily giving or acquiring a complete knowledge. Possibility is there that majority of people do not learn anything only upon telling them. But when you partially involve them, when you give them some examples, when you practically try to solve the problems, maybe in a limited environment, maybe in a controlled environment, so that will be involving them up to some degree, up to some extent, and definitely when a human being is involved in doing something practical, so he learns more. And the third part of it is, says that involve me and I learn. When a person is totally involved, when a person is completely involved in doing something, by facing the practical situations and tries to develop certain alternatives for a solution of that problem, to deal with that situation, so it actually leads him to formal learning. So I again summarize this quotation. I again read this quotation for you people. Tell me and I forget means to say, if you are up to only theoretical learning, if you are up to only gaining theoretical knowledge, this may not result in actual learning. The second part of the quote is, teach me and I remember. Okay, well, for the first part, if you listen to someone, there are chances that just to listen, you may not learn after listening the people. But when someone teaches you in a formal setting, by putting some specific knowledge and by using specific techniques, there are chances that you may learn something, you may remember something. By teaching, we mean making students understand by adopting step-by-step approach. So it leads us to remember at least something. But the final part of the quotation states that, involve me and I learn. When I totally ask a student to solve this question, solve this case study, or when I ask a student to present certain topic and he is supposed to present in front of all the students, all the listeners, so that is actually involvement of someone. With respect to work-based learning, when a student joins some organization and practically involved in getting the things done by himself or herself, so that gives him more concrete learning. So after this quote, we move on to another one. Okay, so this was the final quote according to Franklin, and in this lecture we have learned about the quotations of Franklin,
we have seen different types of knowledge being imparted by the universities, and we have tried to identify the gap, that what type of knowledge is being imparted by the university and what type of knowledge still needs to be started if that is not started, and if it has been started, so what type of knowledge is encouraged to be provided to the students. That is basically the demand of the changing technology, that is basically the demand of the changing work practices, that is basically the demand of the ever-changing environment. So with this, students, I am going to close this lecture and we'll see you in the upcoming lecture, inshallah. Allah Hafiz.